Hello everyone, welcome to PRATHAM Test Prep. My name is Ashish Bhargav, and here we have another episode of daily news analysis that we do from Monday to Friday. And I hope you guys are doing well. आप सारे अच्छे होंगे. Sorry, because of my health issues that I was unable to connect with you guys. So now I'm completely fine with the grace of God. So आप सारे अच्छे होंगे, I believe, and if my voice is audible and I'm visible to everyone, okay. So daily news analysis, what are the purpose to conduct the session is that, like, our main purpose is to conduct the session is you would be familiar with the newspaper, and second one is that you would be able to solve the question that is based on the current affairs. So in this session we discuss about all the important news from the all major newspaper, but majorly we discuss about the Hindu and Indian Express. What exactly we discuss in the news analysis? We discuss about the national news, international news, economy based news, sports based news, science and tech, personal news, and we also discuss about Supreme Court verdict, any amendments, any bills which is in the parliament. So this is very important, especially for the law entrance exam. Like if you are preparing for CLAT, AILET, SLAT, Jamia law, so this is very important to know that what kind of verdict is going on in the parliament, because that kind of question will help you out in the legal aptitude or legal section, or in current affairs or GA portion as well. And here, as I told you, not each and every fact in the newspaper is important. And questions of the days, we'll ask you the 5 questions, and here is quick tips that we discuss about some kind of mnemonics that will help you out to remember all these things, like sorry, and here we have the very first news is electoral bond case. So a clutch of petitions challenging the government elections donation schemes that comes up before a constitution bench today. So हुआ ये कि 5 जजेस की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसको लीड कर रहे थे कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, एंड ऑल्सो कंप्राइजिंग जस्टिस संजीव खन्ना जी, BR गवल एंड GD बाड़ियावाला. इसमें हुआ ये था, जो स्कीम था दैट नोटिफाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट इनैक्टमेंट गवर्नमेंट ऑन जनवरी 2nd 2018 को, जनवरी 2nd 2018, दैट इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रल बॉन्ड्स. ये जो डेट है माय फ्रेंड, दिस डेट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज जनवरी 2nd 2018 को, द ईयर ऑफ 2018, इस टाइम में फर्स्ट टाइम हमारा क्या होता है, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड इश्यू होती है. इलेक्ट्रल बॉन्ड इज इश्यूड. So, in short, ये क्या होता है इलेक्ट्रल बॉन्ड? दैट इज अ इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच एनीवन इन द कंट्री कैन डोनेट मनी टू पॉलिटिकल पार्टीज एनोनमसली. मतलब आपके नाम को वहाँ पे नहीं बताया जाएगा, उससे हम इलेक्ट्रल बॉन्ड को इशू करते हैं. व्हाट आर इलेक्ट्रल बॉन्ड्स? दे वर अनाउंस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली इन हिज बजट स्पीच ऑफ Feb 1, 2017. एक इंटरेस्ट फ्री bearer होता है इंस्ट्रूमेंट, which means that any payable to the sole note, मतलब एक kind of payable to the bearer on demand, similar to एक promissory note होता है कि हम इस इतने अमाउंट हम उसको हम पे कर रहे हैं electoral bonds में. So electoral bonds that can only be used to donate the political parties registered under section 29 of the Representation of the People's Act. मतलब जो आपका electoral bond है, right, that can be only be used to do donate the political parties registered under section 29A Representation of People's Act, उसके according, which have secured at least 1% of the votes polled in the general elections to the Lok Sabha or a legislative assembly. So the parties must encash the bonds within 15 days. मतलब ये जो पार्टी है, जब आपने बॉन्ड को सबमिट करा
उसे इन कैश करने के लिए आपके पास मैक्सिमम टाइम जो है वो 15 डेज का होगा। वाई वर इलेक्ट्रल बॉन्ड्स रिड्यूस? सेंटर के हिसाब से द पर्पस वॉज टू clean the system of political funding in the country and bring about transparency in electoral funding. So it is also that bond had been issued between 2018 and 2020 without any impediments. And so what will happen in this matter now? October 16 को CGI DY चंद्रचूड़ ने रेफर्ड किया द केस 5 जज बेंच के बारे में, और उसके बाद उन्होंने बताया कि इसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं और जिसे हमें रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। सो फिर से अगेन आप अगर देखें इसके बारे में, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में, sold 4 times a year, January, April, July and October. Electoral bonds allow political parties to accept money from donors whose identified are kept anonymous. They are sold multiple 1,000, 10,000, 1 lakh, 10 lakhs and 1 crore. और ये स्कीम फर्स्ट टाइम फ्लोट हुआ 2017 में और इम्प्लीमेंट होता है 2018 में। कौन सेल कर सकता है इसे? ओनली SBI के पास अथॉरिटी। SBI इज अ सोल ऑथराइज्ड बैंक टू सेल एंड रिडीम द बॉन्ड्स। Customer of other banks can also purchase the bond via different payment channel provided to them. फिर भी a political party can only redeem the bonds from one of 29 authorized branches of the bank. कौन सी पार्टी को हम डोनेट कर सकते हैं? कोई political parties must also have at least 1% vote share in the most recent general election or assembly election to receive donations via electoral bonds. जिसको 1% ही वोट नहीं मिली है वो हम उसमें डोनेट नहीं कर सकते। नाउ हम बात करते हैं ईजिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्गो बाय रेलवेज। सो बेसिकली यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए। पहली चीज़ हमारी जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है उसमें हमें क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, राइट। सो दिस इज़ एन इमीडिएट नीड टू डेवलप कॉमन यूज़र फैसिलिटीज़ एट कार्गो एग्रीगेशन एंड डिस्पोजल पॉइंट्स इन mining cluster, industrial cluster and large cities. So as the knowledge of these cluster rates and states, collaboration with the state government is of utmost importance. So this is the second of 3-part series of articles on the Indian Railways, that is capital expenditure and freight business. So the railway has been one of the more cheaper modes of transportation for moving bulk cargo, क्योंकि हमारे कंट्री में जो एक प्लेस से डिफरेंट प्लेस पर हम लेके जाते हैं, द रेलवे इज़ वन ऑफ द मीडियम. सो द गवर्नमेंट हैज़ देयरफॉर रिलीज दैट इट नीड्स टू बी सपोर्टेड विद reduced overall logistic cost and schemes to improve green mobility, and that identify infrastructure investment in the sector as a key thrust area. As the government of India has formulated 2 policies. पहला PM गति शक्ति पॉलिसी, और ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं माय फ्रेंड्स, PM गति शक्ति, राइट, PM गति शक्ति, एंड दूसरा है आपका नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, जिसमें कहते हैं NLP. PM गति शक्ति का मेन एम है टू ब्रिंग सिनर्जी टू क्रिएट अ सीमीज मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इन इंडिया विद NMP enjoying टेक्नोलॉजी एंड IT टूल्स फॉर कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. और जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है दैट फोकसेस ऑन बिल्डिंग अ नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल एंड इंटीग्रेटिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज. So not many major policy components and details are available in government website on PMGS, but in reference to the Indian Railways Department of Promotion and Industry and Internal Trade के बारे में बात करें. So trade website mentions 3 things. पहला, integration of postal and railway networks, 1 station, 1 product, and the introduction of 4,000 Vande Bharat trains. 4,000 Vande Bharat trains without anything about increasing the IR share in moving cargo. So Indian Railway का ये कंसर्न है कि इनका पार्टनर है विथ फ्लाइट ऑपरेशंस के रिसेंट ईयर्स में, जो एनकरेज करता है टू इन्वेस्ट इन वैगन्स फॉर मूवमेंट विद देयर कार्गो, दस हेल्पिंग इन द इंडक्शन ऑफ मोर देन 16,000 प्राइवेटली ओन्ड वैगन्स. फाइनली अगर हम बात करें
if you talk about is environmental consideration that are constraining holding the IR as per the recent government regulations. So environment clearance for all loading unloading facilities has been made mandatory, but the same has not been imposed on road loading unloading facilities. So इन शॉर्ट जो पीएम गति शक्ति टर्मिनल है उसको ईज करने की ज़रूरत है एंड नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को अमेंड करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट सिमिलर आर्टिकल्स अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ भी आपको कुछ सिमिलर आर्टिकल्स मिलेंगी कि हाउ कार्गो ट्रांसपोर्ट कैन बी इम्प्रूव्ड. सो इसमें एनालाइज किया 2018 और 19 में बिफोर द कोविड-19 जो इंडियन रेलवे है 62 मिलियन टन जो थी वो जनरल कार्गो कंसिस्ट ऑफ 45 मिलियन टन मेट्रिक टन ऑफ जनरल गुड्स. फिर भी आप देखेंगे जनरल कार्गो की जो लोडिंग है दैट नाउ वी आर नियर व्हाट अ रियल इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस जिसको हम राइट्स कहते हैं RITES दैट स्टडी हैड प्रोजेक्टेड in 2008 for the next 10 years between 194 to 292. सो जो पार्सल ट्रेन्स है उसमें हमें फ्रीक्वेंटली चेंजेस करने की ज़रूरत है जो अभी रिसेंटली हमने देखा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एंड पीएम गति शक्ति के अकॉर्डिंग. सो वन ऑफ द रीजन फॉर द डिक्लाइन इन द पार्सल सेगमेंट इज द हाई टैरिफ एंड द एनालिसिस ऑफ 15 origin to destination pairs that indicates the both premium scales rates and Rajdhani rates. So the inadequacy of these problems. So another great hope is for the Indian Railway was the expected flip to the general cargo moving जिसे हम private containers होते हैं उनके साथ tie ups करके. एंड उसके लिए हमें दो चीज़ें करनी होगी. पहला होता है हाईली टाइम सेंसिटिव मीडियम टाइम सेंसिटिव MTG. सो MTSG और LTSG कार्गोज हैं दैट इज़ अ प्राइस सेंसिटिव एंड द कार्गो शुड बी मूव्ड अंडर द इंडियन रेलवे फ्राइट रेट्स एंड विच आर लोअर देन द ट्रक रेट्स. सो फाइनली इसमें कंक्लूजन ये निकला कि जो हमारा इंडियन रेलवे दैट नीड्स टू एनकरेज कार्गो एग्रीगेटर्स बाय ट्विकिंग द एग्जिस्टिंग फ्राइट फॉरवर्ड पॉलिसी. So in the long run, new kind of stock to optimize payload and speed that would also be required, which the IR and rolling stock industries are fully capable to design and deliver. Now हम बात करें फिर अगेन वहाँ पे रेवेन्यू फ्रंट मतलब बहुत सारे आर्टिकल्स हाँ सिमिलर आर्टिकल्स हैं इसके बारे में. विल नॉट डिस्कस मच इन डिटेल बट हाँ समहाउ सब में आप देखोगे कॉमन चीज़ें हमने डिस्कस की हुई है कि इंडियन रेलवे की लाइक अगर हम रेलवे को बूस्ट करना चाहें दैट मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री को तो उसके लिए पहले हमें ट्रांसपोर्टेशन और उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. क्योंकि CAG की जो रिपोर्ट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की उसके हिसाब से रेलवे इज़ नॉट इन द टू मच ग्रेट बेनिफिट तो उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है. व्हाट आर नॉर्मल मॉनसून हाइट्स. इसमें अगर आप देखें तो इसमें मॉनसून सीजन दैट दिस ईयर एंड्स विद 94% ऑफ ओवरऑल रेनफॉल making the 8 years in the successions that the seasonal rainfall. और अगर आप देखें सीजनल रेनफॉल में तो 2012 में ये कितने थे यहाँ पे कितने mm थे 2023 में ये कितने ज़्यादा हुआ. सो बेसिकली द डेफिशिएंसी इन ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया strengthens a long term trend to be from the normal rainfall in the region. देखो जहाँ पे फॉरेस्ट का एरिया आपका फॉरेस्ट कवर ज़्यादा होगा वहाँ रेनफॉल के होने ज़्यादा चांसेस होंगे. ड्राई नॉर्थ ईस्ट ड्राइंग केरला बिकॉज उसका रीज़न भी हम डिस्कस कर चुके हैं. सो केरला इज़ वन ऑफ द रेनियस्ट स्टेट इन द कंट्री बट दिस ईयर इट फिनिश विद द लार्जेस्ट डेफिसिट ऑफ 34%. सी ये जो इराटिक बिहेवियर ऑफ द मानसून है रेनफॉल दैट यूजुअली मतलब उसकी वजह से जो वहाँ की फसल होती है जो फार्मर्स होते हैं वो इस पर अफेक्टेड होते हैं. तो बेसिकली इन शॉर्ट में यहाँ पे अगर आप देखें तो 8 ईयर इन द रो दैट मानसून रेनफॉल इन इंडिया हैज़ बिन ब्रॉडली इन द नॉर्मल रेंज बट जहाँ पे एक केरला जो है सबसे जहाँ पे आपको 34% डिक्लाइन हुए. इंस्टेंस ऑफ मालदीव्स प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन इंडिया. व्हाई डज मिस्टर Monsoon keep reiterating his pledge to remove Indian military presence from the archipelago. So since the impressive win in the Maldives president elections September 2023 और इन प्रेसिडेंट का नाम क्या है ये आपको याद रखना इज़ इम्पॉर्टेंट. इनका नाम है यहाँ पे मोहम्मद मुल्जू दैट हैज़ एम्फेसाइज्ड हिज डिज़ायर टू सेंड इंडियन ट्रूप्स
out this country, and while pledging the safeguard the Maldives' independence and sovereignty. So his stance stemmed from the main opposition's Block India Out campaign mounted against outgoing President Abraham Mohammad Solih for his foreign policy of India's first. So is there an Indian military presence? Yes. Because according to Maldives National Defense Force (MNDF), 75 Indian military personnel stay in the Maldives to maintain and operate the DUJAT aircraft and 2 helicopters gifted to the Maldives by the government of India. और जो यामीन एडमिनिस्ट्रेशन है दैट प्रो चाइना टिल्ट इज नो सीक्रेट, एंड ड्यूरिंग हिज टर्म फ्रॉम 2013 से लेकर 2018 तक मालदीव्स और इंडिया का जो रिलेशन है दैट वर पर्टिकुलरली स्ट्रेन more so after Mr. Yamin insistence that India take back the helicopters gifted. So what are the India का इंटरेस्ट क्या है इसमें? देखो एक कंट्री जब दूसरे कंट्री को हेल्प करती है उसमें अपने कंट्री का भी इंटरेस्ट होता है. सो पास्ट 4 years में अगर देखें तो इंडिया हैज़ emerged as the Maldives main security and economic partner that committing और हमें $1.4 billion towards the socio-economic development needs to a Maldives. So Maldives is a member of Colombo Security Conclave that began as a trilateral initiative with India and Sri Lanka and later included Mauritius for maritime cooperation in the region. Our national security is deeply intertwined with our collective security aspiration in this region. So basically इसको improve करने की ज़रूरत है. यहाँ पे recent और in the US Venezuela ties जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे मारिया कोरिना मैच तो है दैट इज़ अ ह्यूज विक्ट्री इन अक्टूबर 22. अब ये सब न्यू जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आपके कंट्री के अपॉइंटमेंट होते हैं आपको मेनली एग्ज़ाम की पर्सपेक्टिव से याद रखनी है, क्योंकि मारिया कोरिना मैचेडो जो है दैट हैज़ वोन अ ह्यूज विक्ट्री इन द अक्टूबर 22 वेनेजुएलन अपोजिशन प्राइमरली. सो फ्रॉम इस पोजिशन की बात करें तो लैटिन अमेरिका में 4th लार्जेस्ट इकॉनमी फिर जहाँ पे Mr. Maduro took office in 2013 and Venezuela has slumped within years to becoming one of the region's poorest. अब हम बात करते हैं क्विक टिप्स की. यहाँ पे आपको ये देखना है कि किंग्स हु एम्ब्रेस बुद्धिज़्म, फादर एंड अंकल ब्रॉट किड्स होम. तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे F स्टैंड फॉर फाइयान, A स्टैंड फॉर अशोका, U फॉर उदाइन, B बिम्बिसार, K खारवेला एंड H हर्षा. इस क्विक टिप्स में आप इसको लर्न कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेमोनिक्स. सेकेंड क्विक टिप्स है यहाँ पे टाइप ऑफ रिट्स. तो CPM हेडक्वार्टर्स, C फॉर सर्शियरी, P फॉर प्रोहिबिशन, M फॉर मैंडमस, H फॉर हेबीस कॉपर्स एंड Q फॉर क्यू वारंटो. तो ये सारे आपको टाइप ऑफ रिट्स यहाँ पे मेंशन की हुई है. आई होप दिस वन इज वेरी क्लियर फॉर ईच एंड एवरीवन. नाउ इट्स टाइम टू क्वेश्चन ऑफ द डे, एंड हियर वी हैव द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट रिलीज बाय. ऑब्वियस इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. सो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंडिया is expected to have the highest growth in energy demand over the next 3 decades. फिर भी India's industrial sector that will emit 30% less CO2 by 2030, and the passenger cars that will emit 25% less CO2 per kilometer driven. नेक्स्ट है आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. एक ऑटोनमस स्टैट्यूटरी बॉडी है दैट एस्टैब्लिश अंडर द एजिस ऑफ व्हाट, किस मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करता है? फसाई जिसे हम कहते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. सो इन शॉर्ट इसका आंसर ऑप्शन ए है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इसके एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 2008 में. इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में ही है. ऑटोनमस स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. हाउ आर नोबेल प्राइजेस अवॉर्डेड? ऑब्वियस हम यहाँ पे बी इज द राइट आंसर.
ये है डार्क पैटर्न. ये डार्क पैटर्न क्या होता है? बेसिकली एक यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन होती है पैटर्न दैट इंटेंडेड टू मैनिपुलेट और डिसीव यूजर्स. सी हमारा राइट आंसर है. रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इंडिया में एड्रेस किया डिसेप्टिव ऑनलाइन प्रैक्टिस फॉर एयरलाइंस एंड ट्रैवल एजेंट्स जैसे इंडिगो, स्पाइसजेट, मेक माई ट्रिप, which has been termed cyber crimes. And these practices known as dark patterns that trick consumers into making unintended purchases while booking flight tickets. So dark pattern that refers to user interface design pattern or techniques that used to manipulate or deceive users, often leading to them take action that they might not want to take, and is typically employed to benefit a company or website at the expense of the user's best interest. Hidden fee और misleading prompts के बारे में बताते हैं. And here where is the last questions, which is Project Udbhav. So Project Udbhav जो है mentioned in the news sometimes is associated with the defense sector. So this is all about the session, dear students, and I hope that you enjoyed the session a lot. And one more thing, that we'll meet you at 3 p.m. today for the deep dive session. Stay tuned, and we'll meet you at the 3 p.m. Then we'll discuss about the very, very important topic and the burning issue of the week. Thank you so much for joining with us. Please take care of yourself, and we'll meet you at 3 p.m. today. Thank you so much. Bye-bye and take care.